Devastated by recent floods, several million people in Pakistan are in desperate need of urgent and long term relief. Alliance for Disaster Relief, a 501c3 organization from Houston, which is a community collaborative partnership of 35 plus entities for Pakistan flood relief efforts, gathered more than $1 million during a recent fundraiser. On achieving the target of $1 million, $500,000 was presented to implementing partner, helping hand relief and development for the start of first phase of immediate relief efforts in Pakistan. Second phase, that is the rehabilitation of flood affectees, will begin soon through the remaining amount after flood water starts to recede and damage assessment is done. Among the donors, the Alliance Chief Patron Syed Javed Anwar, who recently donated $10 million for Pakistan flood relief, also donated $200,000 to the Alliance. Syed Javed Anwar has been on the forefront, spending millions of dollars in philanthropist activities for the people of Pakistan for decades. It's not just him. Heart-powering contribution and support for Alliance efforts by several historians and other Texans made possible to achieve the goal of $1 million recent fund collection within a short span of time. Our community from overseas Pakistanis and other people are very blessed. So I would make a request to every one of us who are here, do whatever we can to think about those people. We could have been sitting in the middle of somewhere in an agricultural land, nothing to eat, no shelter. So just open up your heart. स्पेशली यहाँ मशकूर हूँ सईद शेख साहब का कि जिन्होंने ये कोऑर्डिनेट किया, और उनमें एक स्टार हमेशा से हमारा सैयद जावेद अनवर है, जिन्होंने आज भी 200,000 उन्होंने आज दिए हैं और इससे पहले $1 मिलियन दे चुके हैं, और मज़ीद भी वो कह रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूशन करेंगे. एंड मे अल्लाह ऑलवेज ब्लेस ऑल ऑफ देम हूसोएवर गिव्स whatever they can. जावेद अनवर साहब के साथ तो पिछले 4 साल में उन्होंने बड़ा क्लोजली काम किया है, और पाकिस्तान उनका एक ही मिशन है, पाकिस्तान, एंड दैट इज़ मिशन पाकिस्तान. पाकिस्तान को जब कभी भी ज़रूरत आती है तो जावेद अनवर वो नाम है जो सबसे पहले आगे आता है, और खुले दिल के साथ. Consul General of Pakistan, Mr. Abrar Hashmi, has played a vital role and has supported Alliance for Disaster Relief. He has spearheaded the alliance for multiple years and has brought an unmatched zeal among Pakistani diaspora in Greater Houston to support humanitarian causes through his dedication, motivation, counsel and availability. अपनी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो बड़े पैशनेट हैं, न सिर्फ पैशनेट हैं बल्कि दिल के बड़े खुले हैं और जेनरस हैं, और इन्होंने अपनी हॉस्पिटैलिटी, जनरॉसिटी और फैमिली एट द सेंटर जो वैल्यूज़ हैं पाकिस्तानी, उनको यहाँ पे ह्यूस्टन में न सिर्फ ज़िंदा रखा हुआ है बल्कि उनको इनकी इतनी अच्छी मैसेज की है कि ब्रॉडर कम्युनिटीज़ उनके साथ आज ज्वाइन करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे कांग्रेसमैन एल ग्रीन, कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली, मेयर टर्नर और माशाल्लाह कम से कम डजन अदर इलेक्टेड ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं, और ये हमारी कम्युनिटी ऑल अक्रॉस आई है, तो इनके पैशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. काउंसलेट का बड़ा अच्छा रोल है इसमें, और दे आर ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग विद अस, और अपना इसी वजह से आप देखें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक बैनर के तले जो है ना 35 प्लस ऑर्गेनाइजेशन एक ही शहर में काम करें और इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करें, तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव. Mayor of Houston, Sylvester Turner, Congresswoman Sheila Jackson Lee, Congressman Al Green, Yasir Bashir, Assistant Chief of Houston Police Department, Haroon Sheikh, Firoz Bhandara, Tanveer Ahmed, Murad Ajani, President, His Highness the Aga Khan Council, Tariq Majid from Austin Pakistani Community, Mahmood Mehkuri of Apna Chapter, and many other elected officials and dignitaries participated in the fundraising event to show their solidarity and sincere support for the Alliance for Disaster Relief and for its cause to support the flood affectees in Pakistan. My commitment as the mayor of the city of Houston is that we will join with the Alliance, we'll join with Helping Hand and others to assist Muhammad
in getting the support and raising the necessary dollars sooner rather than later in order for our children in Pakistan needs to be met. And lastly, we need to leverage all of our positions. The needs of the children and the mothers and the fathers in Pakistan is right now. And if there's any region that has the potential to step up in a major way, it is right here in the Houston region. Congresspersonals and several elected officials from Greater Houston announced individual donations for Alliance cause and promised their support to raise millions of dollars in USAID for Pakistan government and non-profit sector to mitigate the flood disaster damage in Pakistan. Flooding in Pakistan is of biblical proportion. It is an ocean, but the human disaster and devastation is unspeakable and unbelievable. This humanitarian effort led by Muhammad Sheikh is going to help the most helpless, the most hopeless, the impoverished people, the nation of Pakistan. But it is about the people. It's about the women, the children, the men, the families. It's about the devastated homeless, 600,000. It's about the poor. And this effort is going to be a dynamic contribution to show that there is love and care around the world. First, let me thank the Alliance for what it's doing tonight to make a difference. And to the people of Pakistan, a very simple message: you are not alone. The people in the diaspora are with you. The people from this country are with you. And through it all, you will have friends. And most important of all, we want you to know that we're sending thoughts and prayers, but we'll also be sending hundreds of thousands of dollars. In fact, millions of dollars. In fact, my hope is that we will understand that 10 billion is not enough. It will take billions of dollars to do this, and I believe that we can get it done. Pakistan is not alone. The fundraiser was made a success through efforts of many members of the organizing committee, which includes Dr. Yaqub Sheikh, Beena Sheikh, Mr. Sajjad Barki, Mr. Atif Khan, Mr. Mahmood, Nahid Ahmed, Faraz Hamza, Dr. Hina Azam, volunteers and many others. Today, as law enforcement officer, I'm here because this is what I've been doing for many years, helping the community get back on their feet. And especially since I'm from Pakistan, my heart was broken. I'm like, I have to help. I have to do something. And we also have other officers who wants to volunteer and make a difference. Today we had a great showing here tonight. We had all of our elected officials, our congressmen coming in and making a big impact on the flood relief in Pakistan, and them announcing all the other relief that's coming forward. I'm proud of my country today that they stepped up. I always say, you know, we have a large Pakistani community in Fort Bend County. So their family or our family, and they're in need. So I'm glad that we're all stepping up. हम डेफिनेटली कांग्रेस-वुमेन और कांग्रेसमैन मेयर ऑफिस के साथ जो है कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके साथ ये एफर्ट लेके आगे चलेंगे और इस एफर्ट को थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि अमेरिका का जो हमारे मुल्क ने हमेशा साथ दिया है तो बुरे वक्तों में अमेरिका भी हमारा साथ खड़ा हो। जब से पाकिस्तान में ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ पर AKDN और वहाँ के जो AKDN की जो एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में ऑन द ग्राउंड काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी जो असिस्टेंस है वो इस वक्त भी जारी है। कुछ दिन पहले प्रिंस रहीम आगा खान ने इस्माइली इमामत की तरफ से $10 मिलियन का डोनेशन का अनाउंस किया। उसके अलावा जो ऑन द ग्राउंड वॉलंटियर्स और जो एजेंसी से काम है वो चल रहा है। और यहाँ पर US में ऑब्वियसली आज की जो सेरेमनी जो फंड रेजिंग हुई है उसमें भी आगा खान काउंसिल का कंट्रीब्यूशन है और इंशाल्लाह contributions आगे और बढ़ते रहेंगे, जारी रहेंगे। Assalamu alaikum, I am Azkar Zarna, President for PSA, and on behalf of PSA, me and my Vice President and advisor, we appeal all of you to donate. We have been active marketing partners with AFDR, running online campaigns, and the turnout has been huge, but we definitely still appeal you to donate more and more with us. Country of Pakistan that has been ravaged by incessant rains. A heart-touching documentary prepared by Alliance was shown to the audience to spread awareness of the flood-caused damages in Pakistan. Pakistan,
fifth most populous country with 231 million persons. Today, all eyes are on Pakistan, as more than 33 million are reeling because of the effects of climate change. Earlier in May 2022, there were several parts of Pakistan that experienced extreme heat of almost 127 degrees Fahrenheit, followed by unusually 5 to 6 times more rains in June, July, and August, causing floods of epic proportions. The coordinator for Alliance for Disaster Relief, Mr. Mohammad Saeed Sheikh, and Director for Helping Hands, Mr. Ilyas Chaudhry, shed light on the history and operational aspects of their organizations. Alliance for Disaster Relief, a United Community Collaborative 2011 में इस्टेब्लिश हुआ और बाद में जाके ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी के तौर पे रजिस्टर हुआ. ये उस वक्त हुआ था जब सिंध में फ्लडिंग थी. आगाज़ था इस किस्म की सिचुएशंस का जो आज पाकिस्तान में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान ने फेस की है. तो वहाँ से लेके अब तक हमने कई रिलीफ एफर्ट्स किए हैं. हमें एजाज़ है कि हमारे चीफ पैटर्न सैयद जावेद अनवर साहब ने अलायंस के प्लेटफॉर्म से मोर देन $5 मिलियन के रिलीफ एफर्ट्स गुज़िश्ता 10 साल में थ्रू आउट द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट किए हैं. और पाकिस्तान में हमारी रीच तमाम जगहों तक है. तो हमारी अपनी टीम्स जो हैं इस वक्त फील्ड में काम कर रही हैं. तकरीबन 150,000 के करीब लोगों तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं 31 डिस्ट्रिक्ट में. और हम चाहते हैं कि जो 81 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये आफत आई हुई है उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मेन जो आफत है वो 81 है उसमें. तो हम हर जगह पहुँचें और लोगों को सपोर्ट करें. इस सिलसिले में हम अलायंस फॉर डिज़ास्टर रिलीफ के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एज एन इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर चूज़ किया है. Every participant at the fundraiser had a resolve to support Alliance for Disaster Relief in its flood relief efforts. We have seen 2 U.S. congresspersons working together. We have seen representatives from the state of Texas working together. You have seen representatives from Harris County, myself, Jack Cagle, the Commissioner of Precinct 4, and representatives of Fort Bend County coming together in support, and the mayor of the city of Houston. आज का जैसे आपने इवेंट देखा कि माशाल्लाह सारी कम्युनिटी ने इकट्ठे होके और पुरजोर तौर पे सपोर्ट किया और अपना एतमाद शो किया और उसको लोगों डोनेट किया. तो मैं यही कहूँगा कि इट डजंट मैटर कि कौन जमा कर रहा है, प्लीज़ स्टेप अप और हेल्प कीजिए. हद तक भी मदद कर सकते हैं करें और इससे हमें खुशी होगी. और अगर ज़रा सा भी हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं तो समझता हूँ ये मेरे अपने लिए बहुत बड़ा काम होगा. और इसमें हम हर वक्त इस अलायंस के साथ हैं और अपनी पूरी कोशिश करें. अपना के प्लेटफॉर्म से अलग फंड रेजिंग की है तो हमने डिसाइड ये किया अपने चैप्टर में कि हम आधे पैसे सेंट्रल अपना को देंगे और आधे यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम लोकली भी एक्टिव हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम कोलैबोरेट करते हैं और हम ऑफ कोर्स सेंट्रल का भी पार्ट है. तो हमने ये कोशिश की और इसमें हम कामयाब हो सके. मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ अलायंस को कि इतना एक खूबसूरत प्रोग्राम किया और सबको मिल के एक साथ जुड़ के जो है हम लोग पाकिस्तान के लिए सैलाब ज़दगान के लिए जो है यहाँ पे इमदाद उनके लिए पैसे डोनेशन इकट्ठे कर रहे हैं. सो कंग्रेचुलेशंस अलायंस को. और यही चीज़ मुझे भी यहाँ पर खींच के लाई और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने तौर पे जो अकेली एक 50,000 का मेरा गोल है जो मैं जमा कर रही हूँ, तो वो जब मेरा जमा हो जाएगा तो मैंने सोचा कि मैं अपने तौर पे वो अलायंस को डोनेट करूँगी. 35 ऑर्गेनाइजेशन है और PAGH भी एक्टिव है इसके अंदर माशाल्लाह. और देखें आज जो $1 मिलियन से ऊपर हो गए मेरे जहाँ तक ख्याल है. टारगेट ये है कि 2 मिलियन हो जाएंगे. पर्पज़ यही है कि यार किसी तरह ना वो जो बेचारे बच्चे हैं, जो शीला ने आज कहा ना कि आप सिर्फ बच्चों की आंखों में देखें. हमारी जो कम्युनिटी है ह्यूस्टन टेक्सास में, इट्स वेरी अफ्लुएंट कम्युनिटी और इट्स वेरी वेल कनेक्टेड. कि इनने अपने इलेक्टेड ऑफिशियल के साथ ऐसे तलकात रखे हुए हैं, उनके साथ ऐसा काम किया हुआ मिल के, तो हमारे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हैं. हम यहाँ पर लेजिस्लेचर्स को मिलें, उनको बताएं कि यूएस और जितना भी इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पाकिस्तान जैसे मुल्क पे जो इतना वल्नरेबल है ग्लोबल वार्मिंग को.
The event was underwritten by Alliance Chief Patron Syed Javed Anwar and Tempura Restaurant and Catering. Alliance for Disaster Relief is working since 2011 under the motto Blessings in Unity. There is more to be done. As I indicated, the international community must stand up and provide the financial support to help rebuild Pakistan, the infrastructure. But what Mohammed Sheikh has done is he has now laid the foundation, sending millions of dollars to Pakistan in their most darkest hour. He is to be applauded and recognized. I'm grateful for his service. अपना अलायंस जो है, जो स्पाउसेस है अपना के डॉक्टर्स की, वो भी इसमें काम कर रही है, अपना सेंट्रल भी काम कर रही है, अपने के लोकल मुख्तलिफ चैप्टर जो कि ऑलमोस्ट 53 चैप्टर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो हर जगह इंगेज लोग हैं। चाहे आप यूएस में रह रहे हो या यूएस के बाहर हो, दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जहाँ पे लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, दे आर ऑल बीइंग इम्पैक्टेड। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, उनकी लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो मैसेज यही है और एक ही मैसेज है कि इट्स वन ह्यूमैनिटी एंड सो व्हाटएवर वी कैन डू कलेक्टिवली टू असिस्ट द पीपल इन नीड इन पाकिस्तान टुडे, it would be beneficial and it would serve humanity at large. Through initiatives and collaborations like these, overseas Pakistanis are standing shoulder to shoulder with their flood-affected brothers and sisters in Pakistan. Tanveer Ahmed Khan, Reach Out Houston.